Let us look into this problem now. A small block is sliding on a frictionless inclined plane. So this plane is frictionless, and this is that small block. The plane is moving upward with a constant acceleration. This plane is moving upward with a constant acceleration. This inclined plane is moving upward with a constant acceleration. Okay. If the block remains at a level height, so what does this mean? The block height is not changing during the motion of the inclined plane. It is unchanged. So what is the acceleration of the inclined plane? So that acceleration we have to find for the inclined plane. Acceleration due to gravity is to be taken as g. So we have made this diagram over here. This is your inclined plane, this is block. Inclined plane is making angle theta with the horizontal. Let us first choose our axis, y-axis, positive axis is in the vertically up direction. Positive x-axis is in the rightward horizontal x-axis, in the horizontal direction. So this is x, this is y. As per question, this inclined plane is moving with a constant acceleration. We say that it is moving with a acceleration. Then another thing as per question is the height of the block with respect to ground is not changing. So h is constant during the motion of the inclined plane. Object, this block, is sitting on the frictionless inclined plane, and inclined plane itself is moving with a acceleration. Object will experience a force or an acceleration g in the downward direction due to the earth gravity field. So our so this block is subjected to two acceleration now. One is due to Earth's gravitational field g, and the other is a, that is because of the motion of the inclined plane itself in the vertical direction. But if we observe this block from the frame of inclined plane, means we fix a frame with inclined plane and observe this block. So what you will see, that the block is sliding in this direction. You are not seeing the surrounding, you are only focusing on your block. So your block is sliding in this direction with an acceleration. That acceleration we should know. Since the plane itself, the inclined plane is moving with a acceleration in the upward direction. So from the pseudo concept, when we are observing it from the frame,
attached to the inclined plane, this block will experience an acceleration g, an acceleration a in the downward direction. So total acceleration in the downward direction experienced by the block will be a plus g. So when you are observing it from the frame of the inclined plane, this observer, so he will see that the block is coming down with g plus a sine theta in this direction. If we take the unit vector along the inclined plane in the downward direction and notate it by IT cap, so, and now if we write the equation of motion for the block, equation of acceleration of the block with respect to inclined plane from the relative motion concept will be acceleration of block with respect to ground minus acceleration of inclined plane. What we are interested in knowing is acceleration of block with respect to the ground, because with respect to ground there is no motion of the block in the y direction. There is no movement in the y direction. So your acceleration of block with respect to ground will be but what is your acceleration of block with respect to inclined plane? This guy is seeing that block is coming with g plus a sine theta acceleration in this direction, that is in the IP direction. So you can replace this with a plus g sine theta acceleration of inclined plane with respect to ground is upward with a magnitude a, but this direction we have taken as y-axis, so j cap. This vector is along this direction. This vector is in the y direction, and our interest is to know all the acceleration or all the motion in the y and x direction, so that we can fix, because they say that y coordinate is not changing. H is not changing, means y coordinate is not changing. So if we get the acceleration, the total acceleration in the y direction, and we equate it to 0, then we can say there is no motion in the y direction. So height of the block will be in the same level. So we will convert this portion of the acceleration, that is acceleration of block with respect to inclined plane, in x and y component, x and y component. So what will be the component of this acceleration in the x direction? This angle will be
This angle will be theta, because this is theta, so this will be theta, and this will be 90 minus theta. So acceleration when we take in this direction will be a plus g sine theta into cos theta, and the direction is towards the negative of the x-axis, so minus I cap its component in the y direction, a plus g sine theta into sine theta, because cos 90 minus theta will be sine theta, acting downward, so minus j cap, then plus for the y coordinate not to change, the component of acceleration in the y direction should be 0, so this portion should be 0. So this we can write as, just take one more step and then so here this y component of the acceleration should be 0, so this should be 0. So we will use this equation. G tan square theta. So our acceleration for the inclined plane in the vertically up direction should be equal to G tan square theta, to make it possible that there is no movement of the block in the y direction. And in the choice it is D which is matching with it, so D will be your answer. So for the students who wants to understand it in Hindi, so let me explain to them as well. इस क्वेश्चन में दी हुई है कि ये फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन है, इस पे एक स्मॉल ब्लॉक रखी हुई है और ये इंक्लाइन प्लेन वर्टिकली अप डायरेक्शन में ए एक्सेलरेशन से जा रहा है. अब ये ए एक्सेलरेशन ऐसा है, इसकी वैल्यू इतनी है, ऐसी है कि इसका जो हाइट है वो चेंज नहीं हो रहा है, इस वाई कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं आ रहा है ब्लॉक के. तो यही डायग्राम हमने वहाँ से यहाँ लाया, दिखा दिया कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है वो ए एक्सेलरेशन से वर्टिकली अप जा रहा है, पूरा कंप्लीट यूनिट. अगर इनिशियल हाइट अगर ये मैं ग्राउंड मान लिया हूँ, ग्राउंड से h है, तो ये h
थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, मीन्स वाई डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लॉक इज नॉट चेंजिंग एट ऑल। वाई डायरेक्शन में चेंज नहीं आने के लिए हमारा मेन फोकस क्या होना चाहिए कि वाई डायरेक्शन में इसके मोशन को, ब्लॉक के मोशन को हम लेकर आए और जो भी इक्वेशन मुझे मिले वाई डायरेक्शन के लिए, उस इक्वेशन को मैं जीरो से इक्वेट कर दूं, जिससे मैं बता सकूं कि भाई वाई डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी हाइट h हमेशा कांस्टेंट होगी। तो उसके लिए हम लोगों ने पहले अपना एक्सिस सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। एक ऑब्जर्वर को हमने बिठा दिया इंक्लाइन प्लेन पे जो फिक्स है, तो ये ऑब्जर्वर मूव नहीं कर रहा है। तो ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा, ऑब्जर्वर सराउंडिंग को नहीं पर इसको देखेगा, क्योंकि ब्लॉक इज फ्री टू मूव ऑन द इंक्लाइन प्लेन। तो ऑब्जर्वर को ये नजर आएगा कि ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में सर्टेन एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है, बट ये एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, क्योंकि आपका ये इंक्लाइन प्लेन ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है और इस पे अर्थ का ग्रेविटी, जो ब्लॉक का अर्थ का ग्रेविटी जो है वो जी एक्सेलरेशन से उसको नीचे की ओर पुल कर रहा है। तो फ्रॉम द स्यूडो कॉन्सेप्ट यू नो दैट व्हेन यू ऑब्जर्व इट फ्रॉम, जब उस फ्रेम से आप देखेंगे जो अटैच्ड है इंक्लाइन प्लेन पे, तो आपको इस पे जो ऑब्जेक्ट जो है एक्सपीरियंस कर रहा होगा ए प्लस जी एक्सेलरेशन। तो इस ए प्लस जी की वजह से ये इस डायरेक्शन में ए प्लस जी साइन थीटा से मूव कर रहा होगा, जो इस ऑब्जर्वर को नजर आएगा जो फिक्स्ड है अपने इंक्लाइन प्लेन के साथ। तो मैंने रिलेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट लगाया, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन will be acceleration of block with respect to ground minus acceleration of inclined plane with respect to ground। तो acceleration of block को हम निकाल लेते हैं with respect to ground, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो ABI plus AI मिल गया। अब acceleration of block with respect to inclined plane क्या है, A plus G sin थीटा है। इस डायरेक्शन, मुझे ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में हमने एक यूनिट वेक्टर मान लिया इंक्लाइन प्लेन की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में IP है ना, कैप मान लिया है। तो इसको इस वे में हमने लिख दिया। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इंक्लाइन प्लेन A से वर्टिकली अप जा रहा है, तो A J कैप हो गया। तो ये वाला जो इक्वेशन मिल रहा है, ये जो इक्वेशन मिल रहा है, इसमें क्या है, एक तो J कंपोनेंट मिल रहा है मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में, दूसरा IP के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मिल रहा है कंपोनेंट इन द वेक्टर फॉर्म। तो मैं IP वाला कंपोनेंट जो है इसको मैं X और Y कंपोनेंट में ब्रेक कर दूंगा, ठीक है। तो इसका जो है x कंपोनेंट है, अगर आप साइड में बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये ऐसे आ रहा है, ये एंगल थीटा है ना, ये ऐसा है, ये एंगल भी थीटा होगा। तो इस डायरेक्शन में a प्लस जी कॉस थीटा, a प्लस जी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। बट ये निगेटिव ऑफ द एक्स डायरेक्शन में है, तो विथ माइनस आई कैप से आ जाएगा, यहाँ लगाना पड़ेगा, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, तो ये वाला 90 माइनस थीटा है, तो a प्लस जी
साइन थीटा तो उसकी वैल्यू है इंटू साइन थीटा हो जाएगा, वही मैंने लिख दिया यहाँ पे। और ये निगेटिव ऑफ द वाई एक्सिस है तो माइनस जे कैप, ठीक है। अब इसको रीऑर्गेनाइज कर लिया। अब जे के डायरेक्शन मतलब वाई के डायरेक्शन में हमारा कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है, तो हमारा एक्सेलरेशन इन दैट डायरेक्शन शुड बी जीरो। तो ये वाला चीज़ को मैंने यहाँ पे जीरो कर दिया, और उससे कैलकुलेट करने पे मुझे मिला a इज इक्वल टू जी tan स्क्वायर थीटा। जी tan स्क्वायर थीटा आपके ऑप्शंस में डी है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा।